All right, so this is going to be the solution to your exercise 13. It says you work for Rock ICT, who produces and sells music. The band Lyrics are planning a UK tour. You are going to manipulate data about concert dates and the venues where the band will perform. Before starting each task, examine the source data files carefully. You may need to manipulate source data. You may place functions in extra columns if required. Now, in this particular scenario, examiner has allowed you to add more columns for your own convenience. Suggested नहीं होता, लेकिन you can do it. Recommended नहीं होता. And even if you add more columns, you can always, shift them to one cell. So the first one was regarding the evidence. I'm going to skip this. It says open this file, save this file as a spreadsheet, and then delete 2 and 3 rows. The row number 2 and 3. Which one is J16 venues? So once you open it up, don't forget to save it in Excel workbook. So you go to Save As, select Browse where you want to save it, and select Excel workbook. Click on Save. Row 2 and 3 are to be deleted. So we'll select row 2 and 3. Home tab, we click on Delete. Next, for each venue, use a function in the vcode column to extract the 4-letter venue code. Okay, so this is the third and the fourth letters followed by the first 2 letters of the code column. Do not include any numeric data. So for example, if the code is ABCD1234, the V code should be CDAB. So third, fourth character is going to become the first 2 characters, and the first 2 characters are going to be third, fourth characters. Okay. So let me just best fit the data. Over here, we are to apply the function. What can we do? So we have to take the third, fourth character, place them as the first 2 characters, and the first 2 characters as third, fourth characters. Okay. And we are also going to join them. So concatenate is going to be there. And also the extraction. The extraction, first of all, is going to be from the mid of this text. We start from the third character, we take out 2 characters, and we join it with the left of 2 characters. We get this? The third, fourth will become the first 2. The first 2 will become third, fourth. We got this? And we can replicate for all. Next up, the capacity for each venue is contained in its code. The capacity column extracts the seating capacity. This is all the numeric data from the code column. So if the code is ABCD1234, the capacity is actually the numerical data, which is 1, 2, 3, 4. This carries 16 marks, so it was not that easy. So from the same code, we are to extract the numerical data or the numbers. And if we visually go through the data, for instance, the first one has 4 numbers, but there is an X at the end. Over here, we have 4 numbers. We have 4 numbers, 4, 4. Over here, we have 5. This is 5, 4, 4, 4. So all in all, the numerical data is varying from 3 characters to, let's say, 4 or 5 or maybe 6 characters. So the point is that it's not consistent. Okay? Each code has different numbers of numeric data. Okay? Plus, there are entries in which we have an X at the end. So we cannot even simply apply the write function, because when we apply write function, we are to specify the number of characters. That number of character is basically changing. सही है? अच्छा. Let's hide these so that we can have all data in front of us. So we are to display the capacity in this column. How can I count the number of characters in a particular cell? Length. So equals to length, bracket open, and we specify the number of characters, or let's say the cell. Now this has 9 characters, and you can see that they are variable.
So ranging from 8 or maybe 7 in some cases up until 10. So that's the max number that I've seen. Yeah. So ranging from 7 till 10. What is common in all the V codes? The first four. So we need to concentrate on the rest of the letters, no? Or the rest of the characters. All right. So what if I use the length function, but I subtract 4? That will take out the first 4 characters, right? Did you get this? Length लगाया और उसमें से 4 minus कर दिया. So the common number of characters which are basically taken or occupied with the first 4, the V code, we have taken them out. Now, what if I apply equals to right of this text and the number of characters are these? When I do this, don't I get the numerical data out? However, there is a problem with this, the X. So whenever there is an X, I need to take that character out as well. And whenever there is no X, the text should be as it is or the numbers should be as it is. ठीक है? अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ? Equals to if the right of this, take out first character. From the right, take out the first character. If that is equals to X. Yeah? If that happens, then what? Then the length of this minus what? 1. ठीक है? लेंथ मुझे क्या करेगी? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिन के देगी. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके कितने आएंगे? 5. Yeah, and minus 1, that is 4. Now those 4 characters are to be considered from which side? Right? Left. X right पे है. अगर मैं right से लूंगा तो X आ जाएगा. ठीक है? So yes, 4 is the answer, but I need to take those characters from the left of this. How many characters? Length minus 1. That will equals to 4. Yep. Value false. If there is no X, then what? Then consider this to be as it is. So let's enter, I get what? 2500 taken out. And if I replicate this, as you can see, all the entries which have an X, I'm considering the characters from the right. समझ आइए? फिर से करूं? Okay. बेटा जी हमारे पास था कोड कॉलम, राइट? कोड के अंदर हमारे पास द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आर बेसिकली द वी कोड and the rest is basically referring to the capacity of that particular venue. अब उस कैपेसिटी में कुछ कोड्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर एंड पे क्या है? एक्स है. ठीक है? अच्छा, दूसरी बात कि कुछ कैपेसिटीज जो हैं वो 4 डिजिट हैं, कुछ 3 डिजिट हैं, कुछ 5 डिजिट हैं, कुछ मे बी मोर, राइट? 6 डिजिट है. तो हमने न्यूमेरिकल डेटा निकालना है, राइट? जो सबसे चीज ज्यादा कॉमन है सबके अंदर वो ये है कि द वी कोड इज बेसिकली द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स. अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ दिस. ठीक हो गया? अब ये जब हम रेप्लिकेट करते हैं वी कैन सी दैट इट इज रेंजिंग फ्रॉम 7 अप अंटिल 10 वेरिएबल है. सबके अंदर क्या चीज कॉमन है? द 4 कैरेक्टर्स, द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स, दे आर कॉमन इन ऑल द कोड्स. अच्छा, अब अगर हम इन 4 कैरेक्टर्स को निकाल दें तो हमारे कंसर्निंग कैरेक्टर्स निकल आएंगे जो कि प्रॉबेबली ऑन द राइट हैंड साइड है. ठीक है? सो आई विल पुट इक्वल्स टू दिस माइनस दिस. सो दैट टेक्स आउट 5. अब अगर मैं फॉर इंस्टेंस इफ आई जस्ट लुक एट द फर्स्ट V code or the code,
तो आप ये देखो, द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स इफ आई टेक देम आउट, द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर बेसिकली 5। ठीक हो गया। अब ये 5 कैरेक्टर्स मुझे किस साइड से चाहिए? मुझे चाहिए राइट हैंड साइड। सो आई अप्लाई राइट ऑफ दिस एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स? These characters. You get this? We press enter, we get the extraction done, and we can replicate. Based on the variable number, the number of characters are basically taken out from the right hand side. Done. मसला क्या है? किसी में x है और किसी में क्या है? नहीं है। जो x है वो कहां पे है? That is at the end. ठीक है। Again I will apply the same function. Length of this. So that will give me 5. अब जिसमें तो x है उसमें से मुझे एक x को निकालना है ना, फिर मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा बचेगा। और जिसमें x नहीं है वहां पे क्या करना, वो उसे वैसे ही छोड़ देना। ठीक है। सो लेट्स से इफ आई राइट इक्वल्स टू इफ राइट ऑफ दिस टेक आउट 1 कैरेक्टर। ठीक है। इफ दैट इज इक्वल्स टू x, then do what? Then subtract 1 from this. Otherwise take the characters as it is. ठीक हो गया। तो यहां पे क्या आया? 4। नीचे वाले के लिए क्या होना चाहिए? 4 as it is. So I'll just replicate it and you can check that wherever there is an x, 1 is getting deducted. ठीक है। यहां पे भी x है, यहां पे x है, so 1 getting deducted. जहां पे x नहीं है वहां पे क्या है? As it is. अब ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे बेसिकली कहां से चाहिए? अब अगर x देखो तो x राइट हैंड साइड पे है, तो दैट मीन्स कि जहां पे भी x होगा आई नीड टू कंसिडर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ दिस, how many number of characters? These number of characters. So you press enter and this is how you can get the capacity. ठीक है। अब the problem is के do you think these many columns are okay, although examiner did ask us or give us the leverage to add columns? What if I don't want to add columns? I want to have the function in just one cell. What can I do? Okay, so I want the capacity over here, right? So I'll put an equals to sign and I'll take this value. This will get me the value, same value over here. This actually means that M3, whatever function and value is applied over there, if I replace it with this, तो मुझे M3 का reference देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। So I'll just open up M3, I'll take the function, copy it and replace it with M3 like this. So I get the same value. There won't be any difference in the answer. So I can take off this M column. Now again, this is referring to J3 and L3. So whatever is in J3 or L3, I'll replace this. So take this. This is for L3. Replace this with L3. Enter. No difference in the answer, so I can take away the L column. Next up, I've got J3. So whatever is in J3, I'll just take it, copy it, and replace with J3. No change in the answer. What about K3? So I'll just take the K3, copy it, and replace with K3. Should not have any impact on the answer. ठीक हो गया। अच्छा, इसमें do I still have J3 again, so I'll just take out J3 and replace with J3. Wherever I get to see J3, I'll replace the function. So simple copy pasting. Do I have K3 or J3 over here now? No. So I can take away these two columns. There will be no impact in the answer. Open it up. A3
I3, so I just need to take I3. I3 में हमारे पास G3 और H3 का है फंक्शन, so G3 को हम इधर रिप्लेस कर देते हैं with G3 and H3 को हम, sorry, G3, and then H3 function is not the function, it is actually a value, so I'll just replace the value like this. I can take away these two columns, do that later. So take away I3 and replace it with I3 over here. And add this cell. ठीक. So we can replicate this and we can take away all these columns. Now it is only referring to A3. Now this becomes very technical, no? The copy pasting. The more the columns, more will be the complication. ठीक है? अच्छा. What if I do it from the scratch in one column? Considering कि मुझे sense समझ आ गई है, now I'm going to try and implement in just one column and not break it up. So I'll just take out the length of this and minus 4, and I will consider these number of texts from the right hand side of this. ठीक हो गया? इस फंक्शन से क्या निकल रहा है? इस फंक्शन से मेरे पास 2500x निकल रहा है. Okay, on this I will apply right of this function, take out one character. If that is equals to x, then do what? Length of this minus what? Minus the extraction which was done from here. Yeah. Okay, I'll copy this. If that is the case, then do this. Length of, I think we did this right. Okay, let's move on. Bracket open close, bracket open close, bracket open. Let's see where it ends. Number of characters. If that is an x, then length of, not A3, length of this extraction. Length of this extraction minus 1. But we have to consider these from the right hand side, no? You have to take out, wait. This function is producing this. So if the right hand side, one character is equals to x, then the length of this function minus 1. And we are to consider the right of whatever this is, A3, and we are going to apply if this happens, and if it is not the case, then we are to consider this function as it is. Argument missing.
I will still have to break it up, I think. So equals to if the right of this, take out one character, equals to x, then the length of this minus 1, and we take out the characters from the left. I think I just added the wrong function. Instead of right, I should have added left. Left of this, take out these many characters, and if not, then this as it is. Yeah. So E3, I'll just replace E3 with this. My mistake, I think I applied right instead of left. That was the only problem with the previous application. But this is how you get the capacity. Do we get this? हाँ जी, किस तरह? बोले. हम्म. अच्छा. So you took the starting number to be 5 and the number of characters after the minus. And if it's yeah, that is okay. Yeah, x है तो फिर 4 5 अगर नहीं है तो फिर minus. But then नहीं, number of characters जो है ना वो वेरी कर रहे हैं. हर केस में 4 नहीं है, हर केस में 5 नहीं. There are characters where we have only, ये यहाँ पे देखो, we have only 3 digits. Yeah, तो मेरा 700 आ रहा है. क्योंकि आप जब 5 करते हो तो 5 कैरेक्टर्स होते नहीं. सो वो 3 तो निकालेगा. ठीक है. आपने कोई एंट्री डाली थी जिसके अंदर आपके पास 5 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स. लेट्स पुट अ, मतलब फॉर इंस्टेंस, if I even if I add more numbers here, right, my capacity is going to be updated accordingly. But in your case, it will only be restricted up until 5 characters. So your function works in this particular given data, but it does not work in all scenarios. मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो आपके वेरी कर रहे हैं. सो योर फंक्शन शुड हैव बीन इन अ वे कि वो हर केस को डील करे. व्हाट इफ आई हैव जस्ट वन कैरेक्टर, चलो 5 के साथ तो काम कर जाएगा, लेकिन जैसे ही आपके कैरेक्टर 6 होंगे तो वहां पे भी आपका एक्सट्रैक्शन 5 कैरेक्टर्स की होगी. समझ आ रही बात? सो इफ यू एड मोर नंबर्स टू दिस, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and again even again, my function even works in this scenario. So it will take out the capacity without the x. But if you exceed the number of characters जो आपने mid के अंदर specify किए हैं, तो फिर मसला है. But yes, you can still apply the mid approach, but the number of characters cannot be specified as a fixed value. Should we try to do that with mid? हाँ, चल mid के साथ भी कर ले. So आपने कहा equals to mid लगाते हैं. Mid of this text, starting number is 5 and then the number of characters. अब number of characters ही तो मसला है कि कितने होने चाहिए. So let's put in 10. ठीक है, just to be on the safe side. जब हम ये करते हैं तो we get the value. ठीक है, obviously 10 characters तो नहीं है किसी के, कम ही है उससे. सही है. अच्छा, what if this is the extraction? अब without the x भी हमने इसको करना है.
और x भी चेक करना है कि नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो ये होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए. So I'll just put in the condition for if the right of this text, take out one character, if that is equals to x, then do what? Then we need to take out the x. Again, we'll have to take help from the length. The length of what? Of this function that you applied. Okay? We'll take out this minus 1. Say we'll be left with the number of characters without x. However, the without x needs to be considered from the left hand side. ठीक है ना? तो हम इसी के ऊपर क्या लगा देते हैं? Left of this. ठीक हो गया? And what if it is not? Then what? Then as it is, this function as it is. Number of characters. I have to close the bracket here, and then that's it. If the right of this equals to x, then the length of this minus 1, that is equals to 9. So we consider from the left hand side. अब यहाँ पे देखो, this is producing me a value error. Why is that so? If I take away the x, तो देखो, it works. But with the x, it produces a value error. Why do you think ये हो रहा है? Because आपके again यहाँ पे जो mid के number of characters हैं, ये वेरी कर रहे हैं, ये 10 नहीं. ठीक है, दिस नीड्स टू बी अ नंबर जो कि आपका रिमेनिंग नंबर होना चाहिए. आपका यहाँ पे आ रहा था वैल्यू. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप बताओ मेट के अंदर आपने क्या लगाए? हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जगह मैंने लेंथ ऑफ A3 आगे -1 minus if right of A3 is 1 x is x hmm. then 5 if not then 4. Again you're fixing the number of characters. That is the only point that I'm making. 5 or 4 की जगह need to enter a function. Yes, it cannot be fixed because it will work in this scenario. Again, whenever you have an x, अब the point is कि by luck यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक. अब यहाँ पे जितने पे x है ना उसके अंदर we have 4 characters. यहाँ पे हमारे पास x है जिसमें हमारे पास 3 characters, ठीक है. So your 4 and 5 caters to 3 as well. So the function is producing the answer correctly, but it will not work in all scenarios. Yes, if you want to come up with your own solution, which just like I have, it should work in all scenarios. No. The last value can be the number or x, or could it be any alphabet other than x? Again, given the scenario, we have x. However, the only change, or let's say the variable data, is basically the number of digits. So whatever function that you derive should be catering to the last character of x, but the number of characters you cannot specify because they have shown you the change in the number of characters, the number of digits.
X, wherever it is coming, it is consistent. It is not changing its character, no? So wherever it is coming, it's at the end and the character is the same. But the number of digits that is actually varying. It's 3, 4, 5, 6, 7, some cases as well. So whatever function that you can make of, I can still say that your function will still work if you address the number of characters in it and not make it fixed. Static ना करो उसको. तो function acceptable है. And when you come up with this function, you were supposed to, try out, okay, what if I add more characters here? Will my function still take out the value? ठीक है. अब यहाँ पे देखो, उसी function से कुछ ऐसा निकल रहा है. So it should not be like this. It should get me the exact value जैसे यहाँ पे. ठीक है. I still believe that it can still work only if you can address the number of characters. आगे चलें जी. So this is 2500x. All right. Create the following name ranges using the contents of the cell contain data except the row 2 given the name. V code needs to be VC, name should be NM, location should be LCTN, capacity column should be CPCTY. Okay. So I think we can do this. V code, we'll select the data, right click, and we go to define name. We specify this as VC. Then the name is NM. So we select data, right click, define name as NM. Location is LCTN. So location, right click, define name LCTN. And this capacity is CPCTY. Done? Okay. Now open this file, which is the tour plan. This one. When I best fit my data, did you notice that my data has dates and time in it? Okay. So whenever your data has date or time in it, and you best fit your data, always extend the columns which has dates or time in it. Why? In order to make sure कि आपका जो system format है, that is as per the Cambridge format, which is the UK format. When your system, your computer is not in the UK format, तो आपकी जो dates होंगी ना, वो कुछ right hand side पे आएंगी, कुछ left hand side पे आएंगी. ठीक है. और उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे ये होगा कि कुछ पे आपका रोज पे आपका फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, कुछ पे नहीं होगा. Now, in my case, all of them are aligned onto the right hand side because the dates and the time are considered to be as a number format. They are not considered as text. ठीक है. So for instance, अगर आपकी dates कुछ इस तरह view हो रही हो, ठीक है, so that means कि आपका system का format ठीक नहीं, and you will have problems. Do not forget to do this. It's a very quick check. Although paper start करने से पहले भी आप इस चीज को देख सकते हो that by looking at your system clock over here. My system clock shows 22/10/2025. So 22 is the date, 10 is the month, and then it's the year. So UK में क्या होता है? DMY format follow होता है. ठीक है. So आपने make sure करना है कि आपका system इसी format पे. By default, they set your systems as per UK format, but sometimes they don't. Sometimes they forget to do it. ठीक है. तो Excel के अंदर it matters a lot. आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होंगी, आपके एरर्स आएंगे और आप यू बी कंफ्यूज्ड कि ये क्यों हो रहा है. बिकॉज व्हेन यू बेस्ट फिट ना, इट सीम्स के द डेट इज एक्चुअली करेक्टली फॉर्मेटेड. ठीक है. इन द सेंटर, इट्स इन द सेंटर, इट्स नॉट, इट मे नॉट बी इन द सेंटर. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू एक्सटेंड अ बिट सो दैट यू कैन सी के आपका सिस्टम करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं.
अच्छा जी, moving on. Merge and align the cells A1 to H1. So A1 to H1, I'm going to select them, click on merge and center. Then format the cell to have a black background with a wide 36 point cell font. So black backgrounds. Select the cell. On the home tab, you have the paint bucket tool. So drop it down to have the background color. The text needs to be white. This is the font color. So we can set it to white. The size needs to be 36 points and the text needs to be serif font. Whenever it is serif, that is going to be ×0. Done. Achha. Enter formula in appropriate cells in the venue, name, location and capacity columns to automatically look up the required data using the named ranges in the spreadsheet saved in step 5. Make sure that all capacities are stored as numbers. Save your spreadsheet. हमने यहाँ पे venue name देना by looking at what? The V code. ठीक. Equals to which function? VLOOKUP. Okay, VLOOKUP, bracket open, lookup value this code, comma, from this data, we need the V code and the venue name. True? Comma 2, comma 0. Yeah. Enter, we get the name. We can replicate this. This is the answer. Okay. Let me add another column. I'm going to take out the venue name again. So let's say venue name equals to lookup, bracket open. Lookup value, this, comma. This code is going to be looked up from where? The V code. So I will select V code like this, comma. I want the result from the name. So I will select name. Same answer. Same answer. Let me show you the functions. Best fit this. Okay. This is the first function I applied. This is the second function I applied. What's the difference? Difference big. Can you spot a difference? आंसर तो सही आ रहा है ना? प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, जी मोहन. 3 किया हुआ, इसमें तो कॉलम है ही नहीं. इट्स अ सिंपल लुकअप. Zara, anything? No. फंक्शन के आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फंक्शन दोनों ठीक है, लेकिन आंसर भी दोनों के सही आ रहे हैं. प्रिफर्ड कौन सा है? VLOOKUP. रॉन्ग. क्यों? क्यों आंसर का जवाब है, सॉरी क्यों क्वेश्चन का जवाब है, यहां पे देखो. Enter formula in the appropriate cells and venue name, location, capacity columns to automatically look up the required data, which is what's happening. Using the named ranges in the spreadsheet saved. Why do you think यहाँ पे उसने हमसे, yeah, they want us to refer to the named ranges that we specified. जब V lookup कर रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें पूरी टेबल अरे को सिलेक्ट करना पड़ता है. उसमें मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं. जब मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं तो ये देखो, नो नो नो, कॉलम नंबर का मसला ही नहीं है. मसला तो टेबल अरे का है. ये देखो, ये टेबल अरे की रेंज दी हुई है, B3 to C125, which is correct. The point is कि जब हम मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट किया तो दैट इज नॉट नेम्ड, राइट? इट हैज नो नेम. बट जब आप सिंपल लुकअप कर रहे हो तो it is taken from the VC and taken the name from the NM column. So this function actually shows that I've used the named ranges. However, this function doesn't. वानिया आपको समझ आई है? हाँ? Okay.
वी लुकअप तक समझ आती वानिया? अच्छा, अब मसला क्या था कि पिछले पॉइंट में ना उसने यहां पे इस पॉइंट में उसने हमें कहा था कि इन कॉलम्स को नेम, यू हैव टू डिफाइन अ नेम। वी डिड दैट। नेम कॉलम को हमने एनएम कर दिया, कैपेसिटी को हमने सीपीसीटी वाई कर दिया, लोकेशन। यू गॉट दैट? हाँ। अब यहां पे उसने कहा है कि भाई हमें ना वेन्यू नेम भी निकाल के दो, लोकेशन भी निकाल के दो, कैपेसिटी भी निकाल के दो बाय लुकिंग एट दैट डेटा। कौन सा डेटा? दिस वन। अब ये देखो वी कोड है हमारे पास, इसका हमारे पास रिस्पेक्टिव नेम्स भी हैं, लोकेशन भी है, कैपेसिटी भी। यही चीज हमें वहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए इन द टूर फाइल। बाय लुकिंग एट द वी कोड हेयर वी नीड द वेन्यू नेम। सही है। अब इसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वी लुकअप का। वी लुकअप जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये रेंज हमें ये स्पेसिफाई करनी पड़ती है। यू नो हाउ टू अप्लाई वी लुकअप, राइट? लेकिन इस रेंज के साथ मसला क्या है कि इसमें हमारी नेम्ड रेंज नहीं आ रही, जो हमने नाम दिए हैं उनको वो नहीं आ। जब हम सिंपल लुकअप करते हैं तो उसमें देखो वीसी का यूज भी हो रहा है, एनएम का यूज भी हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। दैट वाज द रिक्वायरमेंट कि आपने जो भी फंक्शन लगाना है ना उसमें नेम्ड रेंजेस को इस्तेमाल करें। ठीक है। वी लुकअप से वो पॉसिबल नहीं है, सो आई विल जस्ट डिलीट दिस। व्हाट अबाउट लोकेशन? इक्वल्स टू अगेन लुकअप। लुकअप की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लुकअप वैल्यू, दिस इज माय वी कोड व्हिच इज गोइंग टू बी माय लुकअप वैल्यू, कॉमा lookup vector from where I'm going to look up my V code. In the other file, I'm going to refer to this column as my lookup vector, comma. Then it says I need the location. So location के लिए हमारे पास ये कॉल। ठीक है। अब जरा आप इस फंक्शन को देखें तो नेम्ड रेंजेस नहीं आएंगी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, VC। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LCTN। आंसर में गलती नहीं होगी, आंसर बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आपने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है जो एग्जामिनर ने आपके लिए डाली। मार्क्स कटेंगे, पूरे नहीं कटेंगे, थोड़े से कटेंगे। ठीक है। सो आई वुड से कि दे आर थ्री values, so I would say 3 marks will be deducted because you did not select the named ranges and you used VLOOKUP. So that was the only change. ठीक है। यहाँ पे लोकेशन भी आ गई। अब कैपेसिटी पे आ जाओ। Equals to V, sorry, not VLOOKUP, lookup, bracket open, lookup value is going to be V code, comma. This is going to be our lookup vector, comma. Then we need the result vector. The result vector is basically the capacity column. So we'll select the capacity column and we press enter. बच्चों ने जब ये निकाला तो they were like कि सर ये capacity 0 आ रही है without even, yeah, so it's basically storage, storage पे कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा ना। अच्छा जी, अभी देखो ना, अगर वी लुकअप लगाना होता है दैट वुड हैव बीन वेरी इजी टू अप्लाई, नो, and takes probably lesser time if we apply VLOOKUP. Then we have to, you also have to make sure that the capacities are stored as numbers. हाँ। अच्छा, ये जो आपका आंसर निकला है इससे, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। सो 1 करने से क्या होगा, टर्न्स इनटू अ नंबर। ठीक है, जो भी वैल्यू निकली। इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने। आगे देख। So I think you will be able to take the printouts without the rows and column headings, right? Formulas का row and column headings के साथ है, values का without row and column headings है। Yes or no? मुझे बताओ। हाँ। Yeah, this is not just one lookup, na. This is actually 3. Each lookup will be carrying around 6 marks.
या सो इफ यू अप्लाई वी लुकअप तो आप सोचो कि डिडक्शन किस तरह हो रही है आपकी, अराउंड 6 मार्क्स की डिडक्शन वैसी हो जाएगी। या नो नो नॉट 3 times, 2 marks each time, so that rolls up to 6 marks. प्रिंट का 1 मार्क होगा, फॉर्मूलाज के लिए प्रिंट निकाला उसका 1 मार्क है, जो फॉर्मूलाज के बगैर प्रिंट निकाला उसका 1 मार्क है, लुकअप्स के मार्क हैं, नेम्ड रेंजेस यूज करने के मार्क हैं, सो इट गेट्स डिवाइड। हाँ जी, अब तो 90 मार्क्स का होता है, ये जिस टाइम का पेपर है तब 110 का होता है। मैक्सिमम स्कोर होता था इस सब्जेक्ट का, इट वाज आउट ऑफ 400। 90 marks for the theoretical paper, 110 marks for the practical paper. So 2 practicals 220 and 2 theoretical papers 180. So 120 plus 180, that's what, 300? नहीं, ज़्यादा करना है ना हमने। So 90 and 90 180 and 220. So 180 plus 220 400. अब जो हमारा टोटल है that is around 320, ठीक है, with 70 marks for the theoretical paper, 70 each, that's 140, and 90 each for the practical, so that's 120, 180. The total आपका 320 बन जाएगा. However, your total grade is actually calculated out of 360 marks. तो वो जो 40 marks होते हैं वो at times कैम्ब्रिज स्कूल से लेता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही, या फिर आपके जो एग्जाम्स जो आपने दिए होते हैं उसकी एक एवरेज आउट होती है थ्रू अ फंक्शन। सो वो 40 मार्क्स जो होते हैं ना, यू कांट स्कोर, यू हैव टू परफॉर्म टू स्कोर देम। It happened in the COVID days that they asked for the aggregate from the school for the students, probably the second year. First year में तो वैसे ही predicted पे सारे चले गए, बड़े स्टार्स आए थे उस वक्त सब। अच्छा जी, ये जरा समझो या कोशिश करो समझने की। For the dates where there is a concert, in the crew column, enter formula to calculate the number of people needed to set up the stage. Each concert needs 5 crew members, plus 1 for each 500 people or up to 500 of the venue's capacity. ठीक है? If the concert starts before 2000 hours, 2 extra crew members will be needed. हर कॉन्सर्ट के लिए आपको कितने बंदे चाहिए? 5 बंदे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वेयर एवर देर इज अ कॉन्सर्ट, हम यहां पे लिख लेते हैं। सो इनके लिए, राइट, सो हर के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड 5 crew members for each concert. नो नो नो, यहां पे पढ़ो, देखो कहता है ईच कॉन्सर्ट नीड्स 5 crew members, 5 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 1 फॉर ईच 500 और अप टू 500, इसमें एड अप करने, ठीक है। सो 5 तो है हमारे पास, अब इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 500, राइट, so that gives me how many people, how many more people, so that is 1.4. अब 1.4 तो होता कोई नहीं है for every 500, I need 1 for every 500, so every 500 का मतलब ये होगा जो भी कैपेसिटी है उसको डिवाइड करो 500 से, ठीक है। अच्छा, अब 1.4 लोग तो होते नहीं है, या 1.1 या 1.2 या 1.8 होता है, नहीं होता। So in this case, how many people are you looking at? 1. What about the 0.4? अच्छा, चलो इस तरह कर लो। What if the concert is happening and the capacity is 200? You need 5 people plus 1 for every 500 or up to 500. How many crew members? Huh?
नोप, 5 तो चाहिए चाहिए, उनको तो साइड पे कर दो, ठीक है। देन यू नीड एक्स्ट्रा फॉर एवरी 500 और अप टू 500। और अप टू 500 का मतलब यही है कि अगर 100 भी होंगे तब भी एक बंदा ऐड कर लो, 200 होंगे तब भी एक ऐड कर लो, बिकॉज अप टू 500 कंडीशन भी है ना। So 1.4 actually means कि 1 is actually equivalent to 500 और जो एक्स्ट्रा है वो अप टू 500 वाला पार्ट है। तो दैट मीन्स कि हम इसके ऊपर क्या लगा दें, हम इसके ऊपर लगा देंगे राउंड अप ऑफ दिस टू अ होल नंबर, सो दैट इज 2। 1.4 टेक्निकली वैसे भी 2 ही होता, 0.4 इज एक्चुअली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं हम कंसिडर करेंगे, हम तो होल नंबर कंसिडर करेंगे, सो विच इज व्हाई वी अप्लाइड राउंड अप। Why did this come out to be 11? 5200 divided by 500. 10 point something, right? That point is actually a person. So उसको हमने whole number में convert कर दिया. So we applied round up. 200 पे 1 होगा. So we can check 200. ठीक है. अच्छा. Then there's another constraint. The last constraint is if the concert starts before 2000 hours, 2 extra crew members will be needed. 2000 means what? 8 o'clock, right? So if the concert starts before 8 p.m., we need 2 extra people. अब वो हम कहां से निकालें? वो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ये देखो कॉन्सर्ट दिया हुआ, डेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ। अच्छा, क्या मैं इस डेट और टाइम में से आवर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? नहीं, यस, नो। I think I told you equals to R, bracket open, we specify this. R function basically takes out the hours from the given time. So the time is given, this comes out to be ठीक. Now, whatever the extraction is, if this value is less than 20, then what? We need 2. Otherwise, we need 0. So we need 2. Why? Because it started before 2000 hours. Replicate करो, सिर्फ इसमें और इसमें एक्स्ट्रा बंदे चाहिए, बाकी सब कितने लेटर देन 2000 आवर्स से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें टोटल क्रू मेंबर्स कितने चाहिए? वी नीड द क्रू मेंबर्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, so we need 9 crew members for this concept and we can replicate for all. Do we get this? ठीक है। अच्छा, अब इसको एक ही सेल में लेके आना है तो क्या करें? I5, J5, K5 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। So I5 is 5. I'll just copy it, replace it with I5 over here. Then we have J5. इसको खोलो, इसके फंक्शन को कॉपी करो और J5 के साथ रिप्लेस कर दो और फिर K5 ओपन करें, इसकी जो वैल्यू है जिस भी फंक्शन से आ रही है इसको K5 से रिप्लेस कर, you get the same answer. And by doing so, I can get rid of these columns. So thank you very much. I don't need extra columns. सही है? Although start the paper I was being allowed, so I can leave it as it is. अगर एग्जाम में इस तरह है कि you can use extra column, you can always use extra columns. ठीक है? You can, in fact, Excel का जो बेस्ट पार्ट यही है कि आप अपने फंक्शन को ब्रेक डाउन कर लिया करें to simpler versions, because you can merge all the values in one cell later on. ठीक है? So ब्रेक डाउन करने से आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, if you having difficulty in understanding. ये हो जाएगा। आगे प्रिंट द स्प्रेडशीट शोइंग द वैल्यूज एंड देन द फॉर्मूलाज कर लेंगे। प्रिंट टू पीडीएफ। कहता है क्रिएट अ फुली लेबल चार्ट, appropriate chart to compare the number of crew members required at each venue and the capacity of each venue. Make sure that venue names and locations are visible.
Doable? Not doable. Have you heard, Hanji? Why is this 16 marks? I'll tell you why. You know how to make chart? किसका बनाना है उसने? Capacity and crew का, right? Look at the capacity. 700 is the lowest value that I have. Look at the crew. 7 is basically the lowest value. Okay. In order to create the chart, what do? We select the data. We go to insert. We click on the bar chart and we select the bar chart. Yep. Chart बन गया. अब यहाँ पे देखो जरा. Series 1 and Series 2. Series 1 and Series 2. The blue is displayed. But what about the orange one? It's not. Why? Too low. The difference between the two series is too much. ठीक है, वो शो ही नहीं कर पा रहा. यहाँ पे देखो आपके यूनिट्स कहाँ से आ रहे हैं? 0 to 6000 तक जा रहे हैं. बट ये वैल्यूज क्या है? 9 और 7 और 11. सो आई कैन नॉट एक्चुअली सी के ऑरेंज पार्ट है कहाँ पे. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट करूंगा तो इट विल बी टू मेसी ऑन दिस साइड. सॉरी, दूसरा चार्ट यूज करें. कौन सा चार्ट यूज करें बताएं जी. हाँ, change chart type. These are the chart types. Who's that combo? Very nice. It's a combo chart that we can use. Combination chart to be used whenever you have this much difference between the two quantities, so that you can separate both, right? अब मेरी मर्जी है that whichever category, series 1 is basically the capacity, series 2 is basically the crew members. So whichever one I want the secondary axis to be, मैं उसको select कर लूंगा. और जब मैं secondary axis, यहाँ पे आपको preview आ रहा है, right? So you have the capacity on this side. I want this to be the secondary axis. That means कि ये वाला axis on the left hand side will be the crew members. On the right hand side, it will be the capacity. So if I select this happens. Now look at this. Increments कहाँ पे है? 0 से 18 तक. ये increments क्या है? 0 से 6000 तक. ठीक है. So series 1 is basically my secondary axis, which is actually the capacity. Displayed as what? Displayed as bars. The primary axis is basically showing me the crew members, which is actually the orange color, the series 2, displayed as the line. So combination chart. I can even choose this as my secondary, but you need to choose one as your secondary. You can't leave both as the primary, because if you do, this will happen. अब वो लाइन तो बना रहा है, but it's at the end. Again, यहाँ पे जो आपके increments हैं वो display नहीं कर पा रहे इतनी low value, which seems to be the straight line, which is not the case. So you go to change chart type, you select the combination chart, you select either one of these as your secondary axis, let's say like this, and we click on OK. And this is how the chart is made. It's called the combination chart. Whenever your data has too much difference between each other, values. अगर ये भी thousands में होती ना, या hundreds में होती, तो फिर ये इसमें show हो जाना था. ठीक है. Now you need to add the elements. Again, once the chart is made, chart title आप कर सकते हो. उसने chart title बताया या नहीं बताया? नहीं बताया. ठीक है. So we can specify the chart title ourselves. क्या होना चाहिए chart title? This is basically showing us what? The capacity and the crew members. Capacity. Okay, let's write down venue capacity and crew members required. Explain होता है data. Okay. Select the chart. You will have chart design at the top. On the left hand side, you have add chart element, drop it down.
You want axis titles, primary horizontal, primary vertical, secondary horizontal, secondary vertical. So let's add primary horizontal. Let's add primary vertical. Let's add secondary vertical. Horizontal क्यों एक ही है? क्योंकि these are all venues. ठीक है, ये हम रखते हैं venues. We'll replace the names over here. What is this? What is this? Capacity. Very nice. So what's this? Crew members. Crew. Okay, fine. अब इसमें क्या रह गया? What's missing? Huh? The names, right? The names of the venues and the series 1, 2. Series 1 क्या है? Series 2 क्या है? We know कि series 1 is capacity, but we need to name it. So we right click on it, select, right click, select data. तो आपके पास ये options खुलेंगी. Series 1, 2. So edit. I want the series 1 to be as capacity. I can type it out or I can also give a cell reference. ठीक है? So capacity, and this is crew or crew members. Click on OK. What about these 1 to 9? What's this? The venues. Very nice. So edit. It says access label range. Come here and select your venues, which is up until this, right? Click on OK and click on OK. And this is how your chart looks like. Change the UI. So edit and we select this. On OK. ठीक है, so this is how your chart should look like. अब वो कहे कि ये चार्ट को पीडीएफ में प्रिंट कर दो, ठीक है, so you should be able to do it. You just select your chart, you go to file, you click on print, select your printer to be print to PDF. From here, print the selected chart should be the option. You can add header and footer if you want. You can go to page setup. Over here, you can add your header and footer if you want. ठीक हो गया. After this, you'll save your PDF and you'll be done. So this was the solution to your exercise what? 13.